Hello and welcome to the toss, match 9 of the Pakistan Junior League. I've got our match referee, Mr. Iqbal Sheikh. Next to him, the captain of Gwadar Sharks, that's Shamil Hussain. And last but not the least, that's Gujranwala Giants and Uzair Mumtaz. Who's got the coin? Uzair Tails. Tails is the call. And it is heads. उज़ैर सबसे पहले तो बताएं कि क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे. बॉलिंग करेंगे. थोड़ा सा अभी तक वो रिदम हासिल हुई नहीं, मोमेंटम मिल नहीं पा रहा टीम को, पहले 2 पॉइंट्स की तलाश है. बताइए कि आज क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है काम करेगी? जी स्ट्रेटजी तो सिंपल है कि हमने कम से कम स्कोर पे आउट करना है और इंशाल्लाह चेज़ करेंगे. मैचेस देखे होंगे आपने, कल के इसी पिच पे मैच खेला गया था. कितना सोच रहे हैं चेजेबल है यहाँ? जी हम 140 से नीचे इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इंशाल्लाह चेज़ करेंगे. चलिए, टीम में कोई चेंजेस? जी 4 चेंजेस हैं. वाह, गुड, याद है. चलिए कोई बात नहीं, शीट में देख लेंगे. शामिल से बात करते हैं. To begin with, same question, that would you have bowled first as well? Yeah, I would have preferred to ball first, but it's not that big of a deal. I think, if you can put a good total, it's going to be hard to defend. Lots of runs on this. Yesterday we had the biggest power play, 70 odd in the 6 overs. So what kind of score do you feel is going to be a good one to defend? Obviously, we're going to aim high. We're going to go for like 170, even 180. But if anything is less, that's fine, completely fine. Our bowling attack is really, really good. We're going to cover it up. Team news? Team news, no changes. Same team? Yeah, same team. Okay, good luck. Thank you. So, the news from here, it's Gujranwala Giants have won the toss. They've decided to bowl first.